Maintain silence. Good morning to one and all present here, respected principal, teachers, and all my dear friends. Today I am going to tell few words on Republic Day. Republic Day is one of the most historical days in India. This year, the country will be celebrating its 74th Republic Day. Every Indian remember this day because the Constitution came into force. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949, but it came into force on. Please put your hands together for Arya. The next performer is Carol Patole from grades 2nd C to deliver an Marathi speech. माननीय मुख्याध्यापक, शिक्षक वर्ग आणि इथं बसलेले माझ्या बालमित्रांनो, 26 जानेवारी रोजी आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. प्रजासत्ताक दिन हा भारताचा राष्ट्रीय सण आहे. 26 जानेवारी 1950 मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू झाली. संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. सर्वांनी आपल्या संविधानाचे आदर करायला हवे. तसेच आपल्या भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है. सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है. भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है. उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई बर्बाद. My name is Rohit Kumar. I am from Prodhi. Respected principal, honorable chief guest, and teachers, and all my dear friends. Today we are gathered here on the auspicious occasion of Republic Day. First off, all of the greetings to all of you on the Republic Day. Republic Day is an important national festival for us and for our country. This festival is celebrated with great pride. We got independence on 15th August 1947.
After independence, we don't have our laws and policies to conduct our nation in the best way. A committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution, which was adopted on 26th November 1959 and officially came into effect on 9th January 29, 1950. A citizens living in a democratic country enjoy the privilege to elect their leader to lead the country. It assures its citizens justice, equality, liberty, and it also gives us our rights and duties as citizens. However, that no matter who we are, rich or poor, or powerful politicians, or a regular citizens, I hope that we continue to respect the basic principles and values given to us by our amazing Constitution. Thank you. जय हिंद, जय भारत. माझे नाव प्रभा जितेश पगारे, इयत्ता 4थी A. माननीय मुख्याध्यापक, शिक्षक वर्ग व इथे बसलेल्या माझ्या बाल मित्रांनो, आज 26 जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिवस म्हणून साजरा करतो. या दिवशी आपले संविधान अंमलात आले तर या संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर याविषयी मी माहिती देत आहे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रत्येक भारतीयासाठी एक आदर्श व्यक्तिमत्व आहे. त्यांचे पूर्ण नाव भीमराव रामजी आंबेडकर हे होते. त्यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 रोजी मध्य प्रदेशातील महू या गावी झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव रामजी तर आईचे नाव भीमाबाई हे होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे लहानपणापासून खूप हुशार व महत्वाकांक्षी होते. ते शालेय जीवनात 8 तास अभ्यास करत असत. त्यांनी बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या A very good morning to all respected guests, sir, teacher, principal, and all my dear friends. My name is Abdul Wahid. I am from Kochi. My greeting to all of you, as you all know that you are gathered here in the auspicious occasion of 26 January. I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is the most important national festival for us and for our country. This festival is celebrated with great pride and joy. We got independence on 15th August 1947. After independence, we don't have our laws and policies to conduct our nation. A very good morning to Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, teachers, and all my dear friends. I am Yogesh from class 6A. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. The celebrations on Republic Day are the true reflection of unity and diversity of our nation. The main event takes place in the capital city of New Delhi with a grand parade showcasing the military might of our country and all the richness of our cultural heritage. Republic Day. Republic means the rule of the people. By the people means the people themselves can choose their leader. Dear friends, we have come a long way since then. Today India stands as a thriving democracy with a strong and diverse economy, a rich cultural heritage and a vibrant civil society. Today we remember and pay tribute to all the freedom fighters who have fought for our freedom and sacrificed their lives for free and democratic India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. माननीय मुख्यातिथि, प्रधान सर, शिक्षावर और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिमांशु सिंह आप सबके सामने गणतंत्र दिवस पर एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा है। कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए और सबको गले लगाए, हम गणतंत्र का पर्व मनाए। और झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून
जो देश के काम आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रभात सुप्रभात। देश सलामी या तिरंग्याला, देश सलामी या तिरंग्याला, ज्यामुळे तुझी शान आहे, हा तिरंगा नेहमी राहू दे उंच, जोपर्यंत तुझे प्राण आहे. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव श्रीनिवास. आज मी तुम्हाला प्रजासत्ताक दिनाविषयी माहिती सांगणार आहे. ती तुम्ही शांतपणे ऐकावी ही नम्र विनंती. मित्रांनो, आज 26 जानेवारी भारताचा प्रजासत्ताक दिन. आपल्या देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी. A very good morning to honorable chief guests, respected principal sir, teachers and all my dear friends. I'm Devika, friend 63. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January, the Republic Day of our country. This day is a national festival of our country. On this day, our Constitution came into the force on 26 January 1950. Republic Day is an important to us as an Independence Day. Our Constitution was increased by a number on the previous Constitution. It is world's longest Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of the Indian Constitution. The Constitution basic structure is based on the Government of India Act 1935. The Constitution of Government सुप्रभात। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम बच्चों के मन का उत्साह बढ़ाने वाले माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, मेरे प्यारे गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार ने अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कर चले हम फिरा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिरा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज थमती गई, नफ्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। असले हम फिरा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। Good morning to all. I am Joy from 5th B. First of all, I would like to say thanks to the respected guests who came here to encourage us. I would like to say thanks to the principal and all the students who had participated in today's program. As we all know that today our country is celebrating the Republic Day. On this day, back in 1950, the Constitution came into force. सुप्रभात। गणतंत्र दिवस के इस पावन मांगलिक पर्व में पधारे हुए मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल सर, हमारे प्यारे गुरुजन, प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं शर्मा दुलगज कक्षा 9वीं से आप सभी को इस पावन पर्व का तिरंगा है। हम ऋणी हैं उन माताओं के जिनकी कोखियों ने मातृभूमि के भाई को अपने शोध से अभिसंचित कर माँ के कर्ज को पूर्ण किया है। प्रणाम करती हूँ उन लड़नाओं की धैर्यता को जिनके हाथों की मेहंदी के रंग उतरे भी नहीं थे, सिंदूर की बजाय वतन की मिट्टी में मिले हुए अपनी पति की शहादत को धारण कर लिया। मित्रों, आज का दिन उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है। आज का दिन वतन के उन फरिश्तों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत आज का दिन हमारी श्रद्धा हृदय नहीं का पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मित्रों, हम कितने भाग्यशाली है कि हमारा जन्म भारत की इस पावन मिट्टी में हुआ है। यहाँ सभ्यता और संस्कार तो हमारे खून में बसता है। इस पावन रज को नमन करते हुए मैं भारत माँ से विनती करती हूँ, हे माँ, जो शहीदों पर चढ़े में फूल बनना चाहती हूँ, जो शहीदों पर चढ़े में फूल बनना चाहती हूँ, मैं शहादत के शिखर पर मूल बनना चाहती हूँ, जो शहीद
उसके चरणों की धूल बनना चाहती हूँ। मित्रों, दुनिया में इतने सारे देश हैं, परंतु आपने कभी गौर किया है माँ शब्द, जो शब्दकोश का सबसे मूल्यवान शब्द है, जो निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है, इस शब्द की संज्ञा से मात्र भारत माता को सम्मानित किया गया है। धड़कता सबके सीने में जिगर या जान कहते हैं, धड़कता सबके सीने में जिगर या जान कहते हैं, शहीदों की जंग है जनाब, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। मित्रों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मेरे विचारों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा का संबल मैंने प्रतिपल महसूस किया है। अंत में अपने भाषण को इन दो पंक्तियों के माध्यम से विराम देना चाहूंगी। शगुन सद्गुण गुणों को ले बहुत कुछ खास लिख दूंगी, शगुन सद्गुण गुणों को ले बहुत कुछ खास लिख दूंगी, जहाँ तुम सत्य लिख दोगे वहाँ विश्वास लिख दूंगी। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीवन का अमर इतिहास लिख दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। A very warm welcome to honorable chief guests, respected principal sir, teachers, and my dear friends. With a feeling of patriotism in my heart, I, Angel Reddy, wish you and your family a very happy Republic Day. I would like to start the ball rolling with a famous quote of Shahid Bhagat Singh that the sanctity of law can be maintained only so as long as it is the expression of the will of the people. In his quote, the word sanctity means that something very important and must be treated with respect. He expressed that laws framed are treated with high regard and can be seen in people's action and will. India, the biggest democracy in the world, is condemned for its easy attitude towards law. Laws are constituted but never respected nor enforced in our country. For instance, the Indian Constitution mentions that casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished. However, these evils flourish rapidly even today. Respect and application of the law is the cornerstone on which the framework of the legal order and of the political structure of modern nation state have been erected. I would like to conclude my speech with a quote given by Dr. B.R. Ambedkar that democracy is not merely a form of government, it is essentially an attitude of respect and reverence towards its fellow man. Thank you. उत्सव तीन रंगाचा आभारी आज सजला. अरे उत्सव तीन रंगाचा आभारी नमस्कार मी त्या सर्वांना ज्यांनी भारत देश घडवला, ज्यांनी भारत देश घडवला. अध्यक्ष महोदय, टीचर वर्ग व इथे जमलेल्या माझ्या बाल मित्रांनो, मी आर्य मोनित नाते, मी 7वी मध्ये शिकतो. आज काही विशेष माहिती सांगणार आहे, तर तुम्ही शांतपणाने ऐकाल अशी आशाने बाळगतो. सर्वप्रथम सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन किंवा गणतंत्र दिन म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा करीत आहोत. हा दिवस देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी अतिशय आनंदाचा, उत्साहाचा, सन्मानाचा व अभिमानाचा आहे. मित्रांनो, भारताला स्वातंत्र्य मिळाले ते म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी, पण त्या स्वातंत्र्याला 1950 रोजी, कारण या दिवशी भारताचे संविधान लागू झाले. या संविधानात भारतीय देशाचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. या दिवशी राजधानी नवी दिल्ली येथे भव्य कार्यक्रम आयोजित केले जातात. राष्ट्रपती ध्वजारोहण करतात व 21 तत्वांची सलामी दिली जाते. देशासाठी शौर्य गाजवणाऱ्या सैनिकांना राष्ट्रपतीच्या हस्ते अशोक चक्र आणि कीर्ती चक्र हे मुख्य पुरस्कार देण्यात येतात. या दिवशी विशेषतः सरकारी संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये देशभक्तीशी संबंधित कार्यक्रम व स्पर्धा आयोजित केले जातात. भारतीय शीर सुपुत्रांची आठवण होते. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जयच्या जय घोषाने संपूर्ण वातावरण देशभक्तीने परिपूर्ण होतं. या सुवर्णदिनी प्रत्येक भारतीयाने आपल्या देशाच्या शांतता राखायचे आणि आपल्या देशात विकास करण्याची प्रकृती करून त्याचे पालन केले पाहिजे. जय हिंद, वंदे मातरम. A very warm welcome to Principal Sir, teachers and all my dear friends. I, Ananta Stand-Up9, is standing in front of you to share my views on Republic Day. I would like to embark on with a short poem where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls,
where words come out from the depth of truth, where the mind is led forward by thee into ever-widening thoughts and action, into the heaven of freedom. My father left my country away. I have shared this verse from Rabindranath Tagore's poem on this 26th January. As the world is becoming scarcely more insular about protectionism and cliques, religions and borders, and less about the common humanity that were absent in one around us, will end up robbing the humanity from all of us. These lines from Tagore have been so apt across the ages. Hence, let's try hard to realize them sooner than later. Thank you. Respected principal sir, teachers, and all my dear friends, I, Felicia Sayyed from class 8A, would like to deliver a speech on this auspicious occasion of Republic Day. Today, we all are here to celebrate India's 74th Republic Day. This is an incredible and favorable event for all of us. Today, we all must welcome each other for the Republic Day, and we must pray to God to enhance our country. We observe Republic Day in India on 26 January since 1950. On this day, we got freedom from British rule. India is a very... Thank you. सुप्रभात सुप्रभात माननीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आर्यन गुप्ता आज गणतंत्र दिवस देशभक्तों से देश की शान है, देशभक्तों से देश की शान है, देशभक्तों से देश की मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा। ये मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और मेरी जान कुर्बान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और मेरी जान कुर्बान है। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की, सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, मैं आवाज में इतना धमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, मैं आवाज में इतना धमक रखता हूँ। तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा है शान मेरी, तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा, तिरंगा से है धरती मान मेरी, तिरंगा से है धरती मान ऊंची मान मेरी। Respected principal sir, teachers, and all my dear friends, I, the chaperone of Standard 10, is standing in front of you to share my views on Republic Day. Before commencing my speech ahead, I would like to wish you all a very happy Republic Day. I am so enthralled that we are celebrating our 74th Republic Day. This day for me is a celebration of principles like justice, equality, and liberty, as India had adopted its constitution on this very day. But these words like justice, equality, and liberty seems to be mere words which only exhibit in our constitution. Today, as a girl, when I hold up my head high, I can see around me only injustice and inequality. The rules and the regulations in our constitution are way different from the rules and the regulations that are enforced on girls. Today, materialistic things have more acknowledgement and girls have become materials just to be handed over from one human to the other. Humanity has been disrupted far beyond anyone's expectations. Hence, I request all the illustrious members and my friends that let us pledge to uphold the values and the principles of our constitution which are getting vanished. They all say that today's children are tomorrow's future. So, we the tomorrow's future need to work hard today so we can reaffirm our commitments in building up a better India for all. आज मी तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दोन शब्द सांगणार आहे, ते तुम्ही शांतचित्ताने ऐकाल अशी आशा बाळगते व माझ्या भाषणाला सुरुवात करते. आज आपण आपल्या शाळेच्या प्रांगणात प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी जमलो आहोत. आज ते 74व्या प्रजासत्ताक दिनी मी तुम्हा सर्वांना खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा देते. 26 जानेवारी 1950 हा भारताचा प्रजासत्ताक दिन आहे. तो आपला राष्ट्रीय सण आहे. त्याबाबत प्रत्येक भारतीयाला अभिमान आहे. म्हणूनच भारतातील प्रत्येक वाडी वस्ती, गाव विभाग, मोहल्ला, जिल्हा, तालुका, शहर आणि राज्य या सर्वत्र प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत देश प्रजासत्ताक झाला. म्हणजे काय झाले तर त्या दिवसापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेला व भारत देशाला अर्पण केलेला संविधानानुसार देशाचा राज्यकारभार सुरू झाला. म्हणजे
राष्ट्राचे हित डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या प्रकृतीशी तमा न बाळगता अत्यंत 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस एवढ्या कालावधीत जबाबदारीने पूर्ण केली. धन्यधन्य ते संविधान व महान परंपरेचे संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी कोटी कोटी धन्यवाद देते. शेवटी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद, जय भारत. Poverty, unemployment, etc. But we can do is promise to each other that we will be a better version of ourselves, solve this problem, and make our country a better place. Thank you. Jai Thank you, ma'am, for your generous act. Now, last is the last item of this program. Wonderful performance we could achieve only because of the hard work of the teachers and the sincere work and dedicated work. Not only that, but also the students' hunger and thirst to deliver such speeches, to stand in front of the students, that hunger and thirst you have, and that has been recognized or identified by the teacher, and they gave proper coaching or the training for the students so that we could achieve a wonderful performance. I thank all the students and the teachers for giving this wonderful speech. Anyway, so we have spent a lot of time, but it was a wonderful and useful time we have spent. So wish you all once again at 74th Republic Day for all the students on behalf of our management and on behalf of our teachers. Thank you. Have a nice day. And